Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to Commodity Market Analysis with SD, and I'm SD Shanundu Das. I'm a multi-asset trading and investment specialist and I regularly trade commodities. So let's look at the commodity और ये analysis के लिए commodity का different side of analysis रहता है, technical, fundamental, global macro, sentiment, मतलब जो market major participant है उनका positioning. हम लोग जो यहाँ पे फोकस करते हैं इस डिस्कशन में मोर ऑन द टेक्निकल यानी टाइमिंग साइड ऑफ द मार्केट या करंट जो फेज है मार्केट जो हमसे बात कर रहा है वाया ट्रेंड मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन। तो इसके लिए मैं अपना खुद का सेटअप इस्तेमाल करता हूं, दैट इज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड इंस्पायर्ड बाय माय मेंटर्स। एंड इसमें डिफरेंट एसेट क्लास ट्रेड किया जा सकता है। करंटली आई विल बी डूइंग एनालिसिस ऑफ कमोडिटीज, सो आई विल सिलेक्ट द कमोडिटी सेटअप। So I've selected the commodity setup. The setup is going to change and I want the lower table, lower नीचे का table मुझे चाहिए to look at the overall picture directly. Different sectors का picture मुझे clearly दिख सकता है through these data. So metals are on the rise whereas crude oil is signaling weakness. एक बार में पता चल जाए। नेचुरल गैस भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे S&P GSCI को इन द डेली चार्ट। डेली चार्ट में दिस इज अ मेजर पॉज हम लोग देखे थे। कमोडिटी का जो सेल ऑफ चल रहा था उसमें मेजर पॉज हुआ है मार्केट में, but it is still not far away from bullish. You can see background color has changed. Short trend तीनों का तीन ट्रेंड फैक्टर का रीडिंग जो है those are on the bullish side. Just a moment, थोड़ा एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे S&P GSCI is the representative of 24 commodities. तो ओवरऑल कमोडिटी का पिक्चर अभी भी उतना बुलिश नहीं है। अब उसको डिवाइड कर लेंगे और इनटू एग्रीकल्चरल सेगमेंट एंड द बेस्ट मेटल सेगमेंट। एग्रीकल्चरल सेगमेंट इट्स मोर इन अ रेंज। अभी तक कोई सिग्निफिकेंट बुलिश नहीं आ रहा है। बीच में मैंने इसमें ट्राई किया था बट आई हैड टू एग्जिट अर्ली। मार्जिनल लॉस बुक करना पड़ा था डीबीए में। but currently I'm more of a neutral and wait and watch mode in the DBA. Whereas DBB और एक है जिसमें I'm positive, मैं long हूँ DBB में और यहाँ पे अभी भी bullish साइड ही ऑन है। so DBB दिखा रहा है it is at an important लेवल रीच हो चुका है। अगर आप देखेंगे कैंडल देखने से क्लियर पता चलेगा ऑलमोस्ट नियर एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल। तो हो सके करेक्शन हो डाउनवर्ड, बट DBB आई एम पॉजिटिव दैट आई एम मोर पॉजिटिव ऑन द बेस मेटल सेगमेंट। तो जैसे मैं पॉजिटिव बेस मेटल में ब्रॉडली दीज आर द ट्रेड्स आई एम थिंकिंग अबाउट और मैं पोजीशन में हूं। काइंडली मेरा सुन के मत पोजीशन लीजिएगा, खुद एनालिसिस करके लीजिएगा। दिस इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में मैं बुलिश हूं। दिस इज क्लियरली गोइंग अप। एल्यूमिनियम ब्यूटीफुल कमबैक जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। दिस इज द लेवल। अब और एक लेवल मार्जिनल बना है 224, बट लार्जली दिस इज नाउ द लेवल 227। इसके तरफ एल्यूमिनियम ग्रेजुअली बढ़ रहा है। हम लोग इसको पकड़ पाए अराउंड जस्ट अराउंड 215, बट एल्यूमिनियम का जो राइज था दैट वाज मोर ग्रेजुअल and looking at the structure I recommended much smaller position. So in the next major correction के बाद जब buying आएगा there I will rather build up more positions. So currently I'm continuing in my bullish recommendations with the aluminium and I expect largely it's to continue. अगर कुछ changes हो रहा है definitely हमें changes पहले पता चलेगा in the 125 minutes chart। ज्यादा variation नहीं करेंगे time frame का, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द फाइन ट्यूनिंग। बट ओवरऑल एल्यूमिनियम इज बुलिश। इफ आई लुक एट जिंक, जिंक इज बुलिश, वेरी नाइसली गोइंग जिंक। एंड इफ आई लुक एट then we look at copper. Copper has turned bullish too. पहले the Dow structure break. Now I have a buy signal in my setup as well. So first was the Dow structure confirmation. Now we have a buy signal as well. So copper once again has turned bullish. But my copper ka initial phase is still very early.
रिकमेंडेशन अभी भी सेल ब्रेकडाउन, सेल रेजिस्टेंस, बायर्स का जीतने का प्रोबेबिलिटी लो. So ETF is my preferred way for copper right now rather than derivatives. Derivatives में मुझे बेटर लगा एल्यूमिनियम एंड जिंक. बट वंस अगेन मेरा सुन के मत ट्रेड कीजिएगा, खुद देख के समझ के ट्रेड कीजिए. Gold is after a good break, solid break. Gold is having a correction today. It is down almost 75, 0.75, 3/4%. It is down. So as it is down, those who have purchased late, maybe possible you have moved into a loss. But I think sitting tight, it might work because gold एक ऐसा एरिया पे है 2500, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत स्ट्रगल भी होगा और साथ में ये स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी शो करेगा. दैट विल बी द प्रॉब्लम. अगर आप गलत जगह पे लेट एंट्री कर रहे हो गोल्ड, दैट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम. बट अदरवाइज गोल्ड हैज ब्रोकन और एटलीस्ट टेस्टेड वंस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज 2500 साइकोलॉजिकल लेवल. I remain broadly bullish on gold. आप गोल्ड का बुलिशनेस देख सकते हैं हम लोग looking at the gold mini chart as well, and it is exactly taking at a resistance. और कहाँ resistance? मेरा resistance आगे बनता है, पहले बनता है. So this was a major level. यहाँ से it has steadily gone up. Still trend could not change. Trend is neutral. तो light position में ही on the derivative side रहना पड़ेगा towards gold. और हम लोग का बुलिश सिग्नल जब से आया था, ट्रेड इज ऑलरेडी बीन इन ब्यूटीफुली प्रॉफिट. नाउ दिस इज वन एरिया वेयर आई हैड नॉट एंटर्ड, बट इट लुक्स लाइक इट्स क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कोई जो लोग चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन हेड एंड शोल्डर चार्ट. दिस इज द हेड, दीज टू कैन बी कंसिडर्ड एज शोल्डर. So this can be considered as an head and shoulder reversal, which is usually a strong sign of reversal. Silver, I've got a buy signal. I'm either planning to do anything small in mind. I'm not super bullish on silver, but looking at the structure in this inverse head and shoulder pattern, looks like further bullishness is on the card. But important levels है सिल्वर में भी जो बुलिश रहेंगे टुवर्ड्स डेरिवेटिव. आई विल नॉट प्रेफर टू गो वेरी बिग, बट आई वांट टू टेस्ट दिस आउट, सो आई विल रिमेन सिल्वर में बुलिश रहना पसंद करूंगा. नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल. वी हैव डिस्कस्ड बेस मेटल्स, वी हैव डिस्कस्ड precious metals. Now crude oil, once again a Dow structure, more of a range. I'll prefer to avoid crude oil. Let's look at India crude oil as well. It has moved below मेरा जो important level था उसके नीचे move कर चुका है. So I have nothing to do with crude oil right now, and neither bullish nor bearish. I'll prefer to wait and watch, wait and watch. I want more confidence in crude oil. Currently it looks more like bearish, though I don't have a signal, but this is an important level rejection हो रहा है. तो crude oil फिर भी bearish सोच सकते हैं trade. That will be aggressive and speculative. Maybe हम लोग छोटा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा टाइम फ्रेम में न्यू ब्रेक को लेके. बट बाइंग आई एम रियली नॉट थिंकिंग अबाउट, बिकॉज दिस हैज बीन अ मेगा फेलियर. लेट मी हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन, देन ओनली आई विल थिंक अबाउट कि मैं क्रूड ऑयल में बाइंग का. रादर मैं आउटसाइड बैठना पसंद करूंगा इन क्रूड ऑयल. नेक्स्ट लुकिंग एट नेचुरल गैस. नेचुरल गैस went through a correction after the buy trend, buy call. Usually we get a correction. वही correction के थ्रू जा रहा है. अब इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हम लोग फिर से बाय कर सकते हैं, या प्राइस एक्शन जब बुलिश हो जाएगा. दिस इज द प्राइस एक्शन बुलिश अलर्ट यू कैन प्लेस. प्राइस एक्शन जब बुलिश हो जाएगा, दैट विल बी अ पॉइंट टू री एंटर नेचुरल गैस ऑन द लॉन्ग साइड. डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बिल्कुल ही शॉर्ट साइड के बारे में अभी सोच ही नहीं रहा हूं. आई एम fully thinking about long side, and initially I'll start with small position which I'm currently holding as some ETF, but more on the derivative side I'll build up. This will be my first warning level, but I'll keep some position with maximum stop loss of the system unless the background color यानी short term trend अगर एक बार bearish हो जाए, that will be a no-no for me, and I'll fully exit from the natural gas.
सो नेचुरल गैस में मेरा चॉक आउट है प्लान, मैं क्या करने वाला हूं। आई होप ट्रेडिंग के लिए आपका भी प्लान चॉकड आउट है, और आपका प्लानिंग में अगर मेरा वीडियो हेल्प हो रहा है, आई एम वेरी हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर ट्रेडिंग, एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग।